This is the second investigative report on Century Financial Dubai. Before we start our video, we want to clarify that we have good intentions for UAE. We are grateful for this strong and mighty country, United Arab Emirates. We thank the 7 rulers of UAE for their hard work, mercy, and grace upon the people of UAE. May God bless them with a long satisfied life, especially during this time of COVID-19. May God grant them strength and wisdom to take care of this nation. As this nation is considered a safe haven, the foreign investors are investing in the companies in the UAE as they believe that the laws of UAE will not allow companies to fraud clients. They believe in the safety of UAE. We are questioning how this company has been operating and advising clients via WhatsApp messages to buy and sell without any advisory license. If they have an advisory license, they should reveal, and we will correct our videos. Mr. Balkrishan paid Gulf News to send a message to us that we are threatening his and the company's reputation, and he challenged the authenticity of our video. We stand for integrity and duty of care. We do not have any criminal intentions. Our intention is to reveal the truth, as many clients have suffered. They have lost their hard-earned money because of these negligent traders. It's not the matter of amounts, but it's the matter of principle. UAE laws state that in businesses one must have duty of care. Traders like Vijay Valach, Mr. Vivian Joseph Devesh Mumtani have no solid experience in managing high net worth clients. They have no certified documents to prove they are traders with 10+ year experience to toss clients' funds under their aggression. This is Vijay Valach and Vivian Thomas's first job. Their trades are based on speculation and not solid market research. For example, here is an internal document showing Vijay Valach's view to Balkrishan and the other traders. In 2017 they were expecting the market to crash. On the contrary, it was the biggest bull run after Mr. Trump got elected. However, the Century Finance traders put all clients in sell, and this was authorized by the CEO Balkrishan. The clients incurred huge losses as the traders put them on the wrong side of the trend and kept asking them to fund so that they can earn commission. This document shows their market view and how trades were done on speculation, which is not allowed under UAE law. If the client tries to stop communicating with them, they harass them by calling them so many times and they come to their homes uninvited. If the client does not want to fund, they provide them loans by giving them bridge funding. However, the caveat is that the trader must trade on that money, not the client. The trader will put you exactly in the same position as before, and then they will ask you to pay the bridge loan, so by hook or by crook. They don't want you to leave their books, as they have to churn commission whether it's on their own money lent to you or your own money. They clearly state that CMC is supporting their schemes and that the money comes from them. They are merely their agents, but CMC controls everything. Why is CMC partnering with companies like Century Finance? Why is CMC paying them such high commissions for liquidating clients' accounts? Is this ethical? Where is the transparency? Apparently, the commission breakdown is 40 to 60% even if the client's account is liquidated. Century is not even transparent about their commissions. If you have nothing to hide, share your documents on commission percent with us. I really care for your account because I understand what kind of person. Let me finish first. So then, availability of cash was with me temporarily funded because I wanted you to make money out of company's money. I never told you to put money. I thought, okay, if company has made money, now this is a high time for to make money from company's money. Let it be till December 31st, then I know after that what I have to do. Even for that also, when 100,000 I told Bala sir, I need an extension. Even last week also, when I met him, so we were just talking about your account, he and me. And then finally, Vivian came into picture. From day one, he has been doing a fantastic job. We talk 10 times during the day about he and me, about your account. He keeps me posted for every damn thing. And even Sushmita keeps on sending you texts. She is maintaining the same role what she used to do. And then I can see a good collaboration. Now, you know what was the plan? I met Bala. I told Bala, sir, if we have to revive this relationship, everybody knows
Even by the way, yesterday Varun came back after 7-8 months from India after marriage. I'm telling you in between. So we are all the guys there, Devesh, me, and then him and Shaheen. So I met him, said, oh, welcome, how come you back? He said, I'm back. And you know, all of a sudden he said, how fantastic. Then he is saying, the client and the organization. I say, yeah, of course. I said, who's taking care? I said, Devesh is there, because I don't want to say Vivian. Okay. I said, Devesh is there. I'm playing politics now, because I said, Devesh is here. He's the one, after Vijay, first it was you, then Vijay, now it's Devesh. Who is married? He is Devesh Sharma Rasa. अरे क्या तुम मेरी चढ़ा रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें तो समझ रहा हूँ. Why should I say about Vijay? Because इससे थोड़ा खेल खराब हो सकता है. Because Vijay is doing a fantastic job, and I'm not showing in front of these guys. Then otherwise they'll get an ego problem. You understand that? But I go to Bala and I keep on telling him. Now what was the plan? I was being pushed. I had to meet you. 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 You remember how much I was asking? Because it was already decided. Me and Bala were coming to London in November to meet you. Okay? I wanted you to meet him, and at that point of time, as he had already given me the approval for extra cash, I wanted to play your role, and I would have asked you for $500 million also. More equity for you to be utilized from the company so that you can make money. You know, once till in December, we had to close the books, and January में over लेता वो कोई problem नहीं है. You know, once you have closing our books, January 1-2 हफ्ता वेट करो मैं over लेता I expect करके तुम्हारे लिए credit. वो मेरा plan था. Even I was ready to raise bigger money from Bala. And he agreed. And on the day when they were supposed to leave, They are promising the world to the client by luring them in as they must keep churning. The commission partnership with CMC is of 40 to 60% even if the account liquidates. It's not allowed in UAE to earn such high commissions. It is in their interest if the client keeps funding, and they deliberately hedge clients by creating a huge gap in their positions. They are preying on the client's weaknesses and under the false impression that all instructions are being received from CMC UK. They say to the client, as a parent company is outside of UAE, the client cannot take any action against them in UAE. This is not true, as the first tranche of money goes from UAE to UK to initially open the account at Century Finance. The contract signed states that Century is responsible for the client. We are seeking the truth, and our video is not manipulated. There were thousands of calls to the high net worth client. All calls were recorded by the client. There were many meetings, and all meetings are on record. Here is the voice clip of Vijay Valecha and Devesh Mumtani in a radio interview. Joining us on the phone now for his interpretation is Vijay Valecha, Chief Market Analyst at Century Financial. Good morning to you, Vijay. Hi Malcolm, how are you? Good, thank you. Nice to talk. Aramco's profit dwarfs the combined figures for all of the other listed Saudi companies, so it seems fairly inevitable that the IPO will have a massive impact on the market. What is your impression, first of all, of when part one of this IPO might happen? Well, the IPO by itself, of course, is not that big. It's $12 to $14 billion, but the company, of course, is probably the biggest company in the world. It has profits twice as much as Apple does, so it really does make an impact. I was giving you trades, but I was managing account. It was the way I छुट्टी पे गया था 10 दिन के लिए. You were managing. Okay, Vijay, no matter what you say, the point is this: we agreed on several things here. For no reason. No. The point is this: when I put $500,000 in the account, you, Shushmita, you and Yaya took me out for lunch at Gazebo. And they said to me, Yaya said $500,000. I told you don't put $500,000. मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, do not add 200,000. See, as a friend, I'm not managing account. I'm just talking to you as a friend. Are they now getting less rupees for the dirham? And with elections looming and falling oil prices, they seem to be helping these economies. Now, does that mean that we start sending our money now, or should we wait till after the elections? All these questions were put forward to Devesh Mumtani. The main reason for the appreciation of the Indian rupee is the fall in oil prices. As we know, oil deficit is a very important number for the Indian rupee. That would recently have fallen, and this fall we expected to fall down the deficit generally, which was expected at 100 billion for FY19,
and 66 billion for the current year. That seems like going down by 10 billion on each year. So that is a major impact, and that generally is a very key deciding factor for the industry. Are you kidding me? No, never tell this to anyone. ओके ठीक है, तो विजय की सैलरी होल्ड पे चली जाएगी अगर वो मेरे को ब्रिज करा के देगा। नहीं तो जब नहीं जो उसने करवाया उसके लिए भी उसका थोड़ा ये हो जाता है, मींस व्हेन ब्रिजेस आर देयर एंड इफ विजय टेक्स दैट डिसीजन, सी अर्लियर ही डिडंट हैव इट बट नाउ ही स्टिल हैज इट, सो if he doesn't do that, means if he doesn't take the decision, it becomes means his income is put, means some of it is put on hold. That once it's cleared, CMC क्योंकि फिर CMC के end से वो रुक जाता है वैसा, so CMC holds payment of our company, and in turn that goes to Vijay because it is his decision कि client is a preferred client and we have to give that right. If we voice synchronize this, we will see it is a 100% match. Balkrishan was present in meetings himself on many occasions. Here is another voice clip where the account directors are saying that the management met together to discuss the account of the high net worth client and how they can break their confidence and close the account. मैंने उसको फोन किया। मैं तुम्हें एक बात पहला can I just tell you everything जो उसने कही है मुझे? उसके बाद वो उसने तुम्हें बहुत कुछ बोला, वो आगे कोशिश करेगा, he will try Backtrack. They are discussing how they can liquidate the client's account and break their confidence in a management meeting, a plan apparently strategized by Vijay Valecha. I'm telling you, because recently we attended a meeting. I'm telling you, he's the worst person. क्यों क्या हुआ? He's the worst person. The way he was. और जिस तरह से उसने बात की थी मुझसे आज, Actually, I'm telling you, write it somewhere. Sushmita Duwanji is saying Vijay Valecha is planning on liquidating the client's account intentionally and he is the worst person. The management has agreed on this plan. You have seen the low, you have seen the highs. And now you have seen it's approaching towards correction. You have seen all the highs. correction यानी कि आप indices की बात कर रहे हैं। हमारे exposure ही indices में। हाँ, okay, ठीक है। Now we have seen the highs. Now it is approaching towards correction. ठीक है। And from the time you started, you have become wiser. Correct. You learn things over a period of time. Okay. So now it is all win-win situation kind of. You have learned, market is correcting and all these things. Okay. Now, if it goes in your favor, who becomes the winner? Devesh. Not Vijay. At any point of time, Devesh will. Your back is gonna hurt you the way you're sitting. Devesh will say, "Okay, I'm the one." Okay, ठीक है। Okay. देवेश ने शुरू में क्या बोला कि सब अकाउंट में बहुत पोजीशन है, I understand. सब अकाउंट का तुम्हारा कोई वरी है ही नहीं। I understand, but we will get it. फिर? अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? आप कह रहे थे कि अभी देवेश को मतलब कि मिलेगा क्रेडिट। अभी देवेश को अच्छा हाँ देवेश ने क्या बोला सब अकाउंट में है, पैनिक नहीं करना। हमने बोला हाँ पैनिक नहीं है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज सब अकाउंट में देवेश इतना पोजीशन नहीं लेने के लिए बोला उसमें होगी, ठीक है, मतलब मैस होगी थोड़ा, मतलब मैस नहीं हुआ, लंबा हो गया वो क्या था? ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर वो क्या कह रहा था? अच्छा वो उधर ही बैठा हुआ था। सब बैठे थे ना। सुनो ना, मान गए ना, देवेश मान गया। हाँ देवेश तो मान ही रहा है ना, उसको पता ही है। सुनो तो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक साइड में हो। तुमने हमेशा देखा मैंने सब अकाउंट लेके पैनिक नहीं किया, बिकॉज आई थिंक सूनर और लेटर यू विल गेट इट। हाँ ओके, अभी क्या हुआ देखो, अभी तुम्हारा कम हो रहा है ना। हाँ खुद भी तुम्हें पता है ना सब अकाउंट से तुम्हारा पोजीशन कम हो रहा है, ठीक है, बट गलती और एक बार नहीं लेना वो चीज़, बट कम कर देना। नहीं, मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने बोला तेरा जो पैसा बचता है उसको तू एग्जिस्टिंग पोजीशन को बचाने के लिए यूज कर। Sushmita Diwanji is asking the client to use the profits in the client's account to manipulate existing positions so that the client doesn't withdraw cash. The money must stay in for the purposes of churning commissions by taking further trades as CMC pays them commissions on losses as well. उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज करो तुम उसको। अच्छा फिर? अभी विजय क्यों सब अकाउंट को चिल्लाता है? लेकिन वो मीटिंग में क्या कह रहा था?
वो अगर चिल्लाएगा तो उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं करना, देवेश को सही नहीं प्रूफ करना उसको, और उसको अपने आप को रॉन्ग प्रूफ करना। लेकिन देवेश तो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता है मीटिंग के बाद ना मेरे को देवेश का फोन आया। जब मीटिंग हुई ना अच्छा हाँ, फिर तो उसने मेरे को फोन किया, he wanted to talk to me। बट उसके सामने नहीं ना कर सकता है। इसका थोड़ा सा वो वाइब थी, मैंने नॉर्मली ये पता है क्या बोलते हैं यार ये लोग तो कब रिकॉर्डिंग करके पता नहीं क्या कर देंगे, मतलब ये पता है वो उसने मेरे को लैंडलाइन से बोला रिकॉर्डेड लाइन। क्यों आज भी तो लैंडलाइन से किया, तो आज बोला है मेरे को ना आजकल फोन पता कहाँ से करता है रिकॉर्ड, मेरे मोबाइल पे नहीं करता। मुझे भी जानबूझ के करता है। तुम अभी मुझे कह रहा है कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा। नहीं जानबूझ के करता है ये सब। ठीक है, तो जान में रहना, ठीक है। वो लैंडलाइन से अगर कर रहे हैं ना। अच्छा मैंने तुम्हें उस दिन क्या मोबाइल से फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया, फिर उसने लैंडलाइन से फोन किया मेरे को, मैंने तुम्हें उस दिन बोला था यार इसीलिए कर रहा है जानबूझ के। Listen to this, और आज मुझे विजय भी कह रहा था फोन पे, all our calls are recorded। मैं तुम्हें पुल आउट करके बताऊं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वो लगाओ स्टॉप लॉस। मैंने उसे कहा हाँ निकालो, मैंने कहा निकालो लाइन और मुझे भी सुनाओ, क्योंकि आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास भी सबूत है कि तुमने मुझे कितनी बार कहा है कि फ्रांस 40 को मत काटो, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। सुनो ना, इसने ना एक्चुअली उसको थोड़ा डरा दिया है। किसने? किसको? देवेश को? इसने थोड़ा इसको डरा दिया, इसने इसको डरा दिया। इससे डरना है। ये हर तरह से कोशिश कर रहा है to pull him down। Vijay Valacha is trying his level best to scare all traders working on the client's account, including Devesh Mumkni, so that the client's account can be liquidated. हर तरह से कोशिश कर रहा है to pull him down। इसको डरा रहा है। तो पता ये वो जो है ना वो हमें वेयर फ्रेंड्स है, वो मेरे को थोड़ा सा वो मतलब ना वो बहुत डरपोक बंदा लग रहा है मेरे को। कौन? हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ वो मेरे को मतलब सुनो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, इससे तुम्हें पता लग जाएगा। उस दिन हम एक शादी में गए थे, हमारी कोलीग की शादी थी, मतलब एलीट की में। उस दिन मैंने बाला को सेपरेटली पकड़ा। उस दिन क्या हुआ, देवेश मेरे पास आ गया, ये मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें पता लगेगा कि सच्ची में क्या हो रहा है। तो देवेश ने मैंने बोला देवेश तुम क्यों उससे इतना डरते हो, मेरे को बोलो। विजय कर रहा है ना ये सब कुछ। तो उसने मुझे उसका व्हाट्सएप दिखाया जहाँ पे तुमने लिखा है CFB has to fix it और CMC has to fix it ऐसा कुछ लिखा था ना। तुम दो पता नहीं क्या बोल तुम बोलना पड़ता है। ना वो तो हर कोई बोलेगा। तुम्हारी जगह होगा गुस्सा होगी तुम मेरे से। वो तो मैं डाला है तो मुझे निकालो। सुनो ना वो मुझे दिखा रहा था कि देख मैंने तुम क्यों डरते हो उससे डरने से क्या है, तो उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज लिखा कि तुमने व्हाट्सएप पे लिखा। मैंने बोला इसका मतलब मैंने करेक्ट। इसमें क्या है? Exactly. वो तो मैं उधर भी तुम लोगों के सामने खेल रहा है पूरा गेम, विजय खेल रहा है पूरा गेम। वो चाहता है देवेश को किसी तरह कमजोर करके इसको खत्म करके अकाउंट को। हाँ Vijay Valacha wants to liquidate the client's account. सोच रहा है ये उसका गेम चल रहा है कि किस तरह से करे, क्योंकि no one is in favor of it. Everyone is saying no, you have to put your heart and soul. Everyone markets are in a fantastic situation and everything. Bala is against these guys' strategy. उस दिन हम मीटिंग में गए थे ना, he was very upset. Balakrishnan, the CEO, is aware of the Chief Investment Officer Vijay Valacha's strategy. He is against it, but he is allowing the strategy to be executed. Is this how clients' accounts are discussed? How can CMC partner with agents as Century Financial UAE? Is this what happens in CMC UK as well? These are criminal and fraudulent intentions towards the client's account. This is against the law in the UAE as there is no duty of care. He was very upset. बाला ने वो तो अच्छा तुम लोग खत्म करो फिर मैं बता। हाँ बोलो। नहीं बोलो नहीं पहले बोलो। फिर बाला ने क्या कहा? बाला ने कुछ सीधे बोल दिया, विजय बोल रहा है कि मतलब इस अकाउंट में ये हो गया, इट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। और पता है क्या बोल रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। हाँ वो मुझे फोन पे करा। हाँ तो देवेश को बुलाया उन्होंने, पहले हमारी मीटिंग सबसे एंड में आया। तो जब देवेश आ गया तो आई स्टार्टेड, मैंने कहा भाई अब ऐसे हो गया था, व्हेनेवर शी हैज पैसा तो उसने डाल दिया। अभी ऑफ लेट हमारा सब अकाउंट की स्ट्रेटजी थी, विजय ने उसको नोट किया। यस मैंने कहा विजय तुम बताओ, मैं 750 जब उसको पता भी नहीं था पूरा, उसको 750 किस लिए डाला। मैं तुम दोनों को लेकर गया, तुमने कहा कि ऑयल और इसको टैकल करते हैं।
मेरे को पता भी तुम लोगों का 750 में लगता है, उसमें 2 महीने लग जाएंगे, तो 750 ठीक है। बट यही था कि सब अकाउंट में रखेंगे, इज इट राइट और रॉन्ग? यस इज राइट, इसको इधर रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ट्रेड करेंगे, जब ज़रूरत होगी दिवेश ने कहा कि मैं आई विल मैनेज द लेवरेज, तो जबकि उस अकाउंट का मैस बना हुआ है, इसको विजय करा यस मैस बना हुआ है। They are saying that Vijay Valcha and Devesh Mumtani and the management all agreed that Vijay and Devesh made a huge mess of the client's account and their funds. वो ये पता है किसने बोल रहा है, कुछ समझ के नहीं, उसको मजा आ रहा है कि वो मैस बना हुआ है, उसको सिर्फ उस बात का मजा है। They are saying that Vijay Valcha is enjoying that the account is in a huge loss on the mess. When I was home, it was $850,000. अरे मैंने पता है तुम्हें बीच में क्या हो गया, बोल रही हूँ तुम्हें। मतलब ये दोस्त के लिए वो अगेंस्ट जा रहा है कि हाँ इसमें मैस हो गया, इसको ये करना है, उसके साथ ही वहाँ पे जा रहा है। अच्छा, सबसे मजेदार बात पता है क्या, उसका अपर हैंड है, वो लेके आई trying to manipulate, that's all. लेकिन all of a sudden why is Vijay against me? वो अपनी एस बचा रहा है, he is safeguarding his reputation and ass. They are confirming that Vijay Valcha is safeguarding his reputation and protecting the mess he has created. So what's gonna happen if, for example, I don't remember that. अच्छा, उसने बोला to put 5 million और कोई ये अकाउंट में कुछ नहीं हो सकता, बस उसका तो ऐसे हो जाता है। Vijay Valcha and CEO Balakrishan want the client to fund further $5 million USD. They are intentionally putting the client in this position to receive more funds so that they can churn profits on commission. मैंने उनको एग्जांपल्स भी दे दिए, बंदे का फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का पोटेंशियल, वी हैव सो मेनी गाइज इन द मार्केट, देन वी गो, तो वहाँ पर वो बोलते हैं चलो मिलियन से स्टार्ट करते हैं। सी मेरा एम है उसको 10 मिलियन 20 मिलियन तक बाय माई सर्विसेज, इट्स लाइक अ बैक trust or confidence के through? क्लाइंट ऐसे भी बोलते हैं कि यू नो लाइक विंडो शॉपिंग, हाँ एम होता है, एक पर्पस होता है क्लाइंट के लिए, चलो वो जैसे तुमने 2 लाख से स्टार्ट किया, मैंने कहा थ्रेशोल्ड मेरा इतना है, लेकिन सर्विस इतनी अच्छी होनी चाहिए, वी हैव टू वर्क विद द क्लाइंट फॉर इयर्स टू, नॉट फॉर द 6 months और 1 year। इससे हमारा जॉब भी मुश्किल होता है। कब तो फिर जब विजय ने ऐसे कहा, बाला ने क्या कहा? नहीं, बाला सेड कि वी डोंट हैव टू डू दिस वे, वी It was part of the conversation. उसने ऐसे मतलब अपना से उसने बोल दिया, देखो वो जैसे तुम्हें नेगेटिव बोल रहा है वैसे वो वहाँ पर जाके भी लेकिन नेगेटिव बोल फिर रहा है। अच्छी बात क्या हुई, मैंने सेपरेटली बाल और मैं 1-to-1 फॉर सम टाइम। हमारे साथ डिफरेंसेस ये है, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, वहाँ पे तो किसी को पता नहीं ना, उसके बाद ही शराब मानेंगे। पीकर मेरे को क्या बोला भी, तुम मेरे साइड पे आ जाओ, मैं उसका अकाउंट अप करूँगा, मतलब उसको आई नो यू आर गुड इन नो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तुम मेरे साथ जुड़ो, हम देखो हम क्या करेंगे, हम पार्टियाँ करेंगे, उसको मतलब ही नोज दैट वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट देम व्हेन इट कम्स टू क्लाइंट। So what did Mr. Bala say? जब वो ऐसे बोल रहा था? No, in the meeting what did he say? की बात कर रहा हूँ। उसने यही कहा कि ऐसे नहीं क्लाइंट के साथ करना है, वी हैव टू रेक्टिफाई इट एट द सेम टाइम, चलो मैं मिलता हूँ उससे, मैं भी। They are also discussing how the chief investment officer is manipulative and wants to intentionally liquidate the account. These voices are not purported. We are challenging the management staff of Century Finance to do a voice synchronization test. We have already proved that Vijay Valcha and Devesh Mumtani are 100% match. Balkrishan and Century Finance, if your company is 100% regulated, kindly share the following: your advisory license from 2015, your license to trade in foreign markets, trade certifications of Devesh Mumtani, Vijay Valcha, Sushmita Diwanji and Vivian Thomas when they joined the company. Show us that you have the right to click on behalf of the client when there is no click global policy. ओके, जैसे मैंने आपको फ़ोन करके कहा था उस दिन, राइट, कि नैस्डैक कब आए, फिर मैंने आपको कहा कि विजय ने मुझे कहा है कि यूरो में 1.1940, राइट, और फिर उसने मुझे दोबारा फ़ोन करके कहा कि इस अकाउंट के लिए इट्स टू मच, लेवरेज हो जाएगा। हाँ, तो अगर वो लेवरेज की बात कर रहा है तो फिर उसने मेरा स्मॉल कैप क्यों खुला रखा? वो तो है, उसमें भी तो लेवरेज हो रहा है। I mean, मैं कोई कि नहीं, लेवरेज हो रहा है ना, मार्जिन खुल गया ना, और मार्जिन खुल गया और उसकी वजह से हमारा AV 50,000 चला गया। हाँ, लेकिन मेरे 1.1940 पे जिस पे मैं स्टॉप लॉस लग, उससे कौन सा इतना बुरा हो रहा है? नहीं,
So I really don't understand. और अभी वो देवेश मुझे सच में मैं सीरियसली बोल रही हूँ क्योंकि देखो अभी तुम अगर देखो भी ना मतलब ये यूरो यूएसडी तो सच्ची सब सस्ती चीज है यार करेंसी तो बहुत सस्ती है क्या है करेंसी में कुछ नहीं है लेकिन उसने मुझे लैंडलाइन से किया और उसने मुझे 2-3 बार कहा कि it is too much leverage you cannot do that और आधे घंटे पहले उसने मुझे ये कहा बात बोलो तुम अगर 15 मिनट्स पे स्मॉल कैप लेते हो ना तो उसका वैल्यू पता है कितना होता है अराउंड 78,000 और वहाँ पे तुमने कितना खुला रखा था 1,100 हाँ सोचो फिर कितना तुमने खुला रखा था वही जगह पे यूरो यूएसडी का तुम अगर 100,000 लेते हो 2 लाख लेते हो 2 लाख का कितना बनता है 239 उसकी वैल्यू है तो कुछ भी नहीं है तो आई डोंट अंडरस्टैंड वो मुझे मिसगाइड क्यों कर रहा है तो इधर से लेवरेज कैसे हो गया इधर से लेवरेज हो गया और इधर से खोल के रखा वो लेवरेज नहीं हुआ अभी मैंने शाहीन देवेश विजय ये मेरे लिंक्डइन पे थे ही ओके मैंने इनको ऐड कर दिया ओके एंड उस पे मेरा पूरा प्रोफाइल है लेकिन याया आई वांट टू आस्क यू समथिंग ठीक है ओके एंड मैं आपके देखो इसने कब आपको फोन करके शराब पी के कहा था कि कौन सा महीना था याया 2-4 महीने हो गए नहीं इससे ज्यादा टाइम था इट वाज पता नहीं आई थिंक मार्च अप्रैल की बात है शायद नहीं फिर मैंने बाला सर को भी बता दिया ना फिर मैंने शाहीन आपको फोन किया था और तुम मेरी साइड पे आ जाओ राइट करेक्ट तो आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू मी क्योंकि आप मेरी साइड लेते हो करेक्ट राइट ऑफ कोर्स फिर इसने उस टाइम कहा था कि ठीक कर दूंगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा 2 मिलियन यू रिमेम्बर दैट उसने कहा था कि नहीं कहा था राइट ओके How can CMC partner with companies that are unregulated and intentionally destroy and liquidate the client's account? Companies where meetings are held by management and strategies are put in place to liquidate the client's account. Century provides bridge funding to lure back clients to pursue their strategy to liquidate the account. This is intentional, illegal, and there is no duty of care. The CEO is aware of this, as you can witness it from multiple audio recordings. They want the client to fund $2 million USD and then $5 million USD and so forth. The Chief Financial Officer Vijay Valacha, Director Advisory Devesh Mamtani, Vivian Thomas, Yahya Sufi and Sushmita Diwanji cannot be trusted with the client's money. They are unfit to manage customers' money as they are plotting to destroy the client's account and standing within the company. This is all in front of the eyes of the management team who agrees it's morally incorrect, and how can someone trust this company with these types of people? They have no principles and they constantly violating customers' trust and rights. How can they manage multi-million-dollar clients' portfolios? If you are also a victim, then report the fraud with us on the website live chat www.fraudcenturyfinancial.com, or you can mail us at report@fraudcenturyfinancial.com.